career counseling and test preparations for students, those who are completing class 11th and 12th. They prepare with us for the competitive examinations pertaining to various streams choices that they have made. And beyond this, we also have good, I would say, hold on inviting the people from university towards getting these podcasts done to spread more information about the courses that are run by the universities and the demand that students have in terms of the choice that they want to pick up from these universities. So somehow we have to try to understand what is an immediate requirement for us in terms of career choices. So when we are talking about career, we are talking about many types of I would say dreams that we want to realize, and you all have certain goals, some purpose that you have kept for yourself. We have just one work that we do, that is we help you to achieve these purposes. Whatever purpose you carry, whatever college you want to get into, our role is to help you to get into those things what you have thought. I always believe that we should set you free in terms of making choices so that you remain confident, and the more freedom that you exercise over the choice of careers that you have, more confidence you would have in terms of dealing with the real life problems ahead in life. So कोशिश यही करनी है आप लोगों को that we try to catch up with the pace which is around us in the education world. We should be aware about more career options, the new age opportunities which are currently in process. So आप लोगों को कितने करियर्स के बारे में पता होगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो इफ यू कैन काउंट देम, कितने करियर्स के बारे में वी ऑलरेडी हैव सम आइडिया? Anyone who says that I have idea about more than 5 careers, 10 careers, or are we stuck with few typical stereotyped options related to our streams only? Where is class 12th over here? Okay, this side, and this is class 11. Okay, so class 11 will have more time and you can enjoy the session in terms of collecting information and deciding. Class 12th, you already have boards coming, and academic excellence is also needed as far as getting into the top colleges is concerned. But beyond that academic excellence, we should also hold a suitable profile for a particular course that we want to do. Now, if we have some idea about those courses, then only we'll be able to pick up. Being a girls' school, I can understand what kind of thought process is there. Girls are considered to be pretty conscious with their career approaches these days. There is a lot of, I would say, transformation, I would say, in the field of education, especially when it comes to girls. They have started picking up even those options that were conventional at some point of time and probably new age for some point of time, but now they have started catching up with even new age career options. So girls are doing a tremendous job as far as careers, new age careers are concerned. They are getting into every field of their choice, and gone are the days when we used to talk about that we will choose only things based on our academics. Now people are picking up the things based upon their hobbies, their passion areas, and I'm still hopeful that I do have some people from here, those who talk about some non-conventional careers.
some distinct careers that they can pick up without much worry, without having that fear of failure or fear of rejection in certain criterias. So I want to know, I would like to keep this session interactive first of all. So I would like to know your idea about career, especially being in class 12. uh, uh, this need is immediate that you have to pick up some kind of choices. So how many of you are independent in this approach? How many of you are clear with this thought that this is what you are going to do? Okay, good. And may I know, like, some choices that we are willing to pick up, some choices that we are willing to pick up. This is what you want to do. May I know those things? कौन से careers pick करना चाहते हैं आप? Yes, anyone can answer. Those who said yes, कोई भी career that you want to or you are preparing, उसके बारे में बात कर सकते हैं. Designing, illustrations. Okay. So Fashion designing as well as graphic designing. Okay. So what is your name? My name is Manushri. Manushri. So Manushri wants to pick up a career called design, and she is passionate about graphics and fashion, where illustrations are an integral part of those careers. So I'm sure you have done some kind of work into it. Yeah. And what all colleges are you targeting? NID and NIFTs. So NID, you have 3rd or 4th December as the last date coming in for filling the forms. You have already done that, and I'm sure you must be having good interest into sketching part. I would say means illustrating the things. More important is when you get into NID kind of colleges, or you target such kind of colleges, you need to have a problem solving approach. That is, you should be able to think in terms of design, how you can derive a problem, how you can derive a solution to a problem step by step, is what is focused in curriculums like what NID teaches. So you have some wonderful programs in NID, but very few seats are there. You have hardly 10 seats per course for general candidates, and it's not easy to get through with NID kind of courses, which is in Ahmedabad. Uh, Anybody else who is preparing for design? Okay, you are also preparing for design? Okay, and what target you have? I'm preparing for NIFT. NIFT. So your concentration is more on fashion. Okay, so fashion के लिए NIFT is one of the best colleges, no doubt. And are you aware about more colleges beyond this? Because Pearl Academy, okay, and not many. अभी तक फॉर्म्स कितने भरे हैं आपने? NIFT you have already filled. Okay, and I'll tell you few more options, both of you, right? Even for others, those who are considering design as a career, you have some excellent career options in terms of picking up colleges like uh, Indian Institute of Crafts and Design in Jaipur. This is also a government college that very few people have an idea about, and IICD can be looked into. Then you have Northern India Integrated Institute of Fashion Technology, NIIFT, in Mohali. This is affiliated to Punjab government. We can go for this as well, in case you are willing to go for fashion. But as far as NID is concerned, it is more into graphics, animation, right, product, industrial design. So those kinds of things are there. So in such scenario, you need to have a very specific list of colleges. Like if you want to go for NID, you have another college like Center for Environment Planning and Technology, CEPT, Ahmedabad. Are we aware about it? CEPT, Ahmedabad. CEPT, Center for Environment Planning and Technology.
which normally offers architecture also, right, for science students, those who are with maths. It offers architecture, and side by side it also offers bachelor's in design. And besides that, you can also apply for IIT Bombay, right, that is through UCEED. So there is an examination called UCEED, and in case you qualify this examination, you get a chance to study in IIT. So it is not that IITs only offer courses like BTech, they also offer courses like design, and they also offer electives. When you study even design, or when you study even engineering there, you get electives to study like literature or social sciences or humanities also. IIT Madras also offers a 5 years integrated program in humanities and social sciences. You call it MA in developmental studies. So that is offered by IIT Madras. So IITs are not only meant for engineering, they have more courses available. It's only a matter of awareness. हम सोचते हैं IIT में केवल PCM स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, जबकि वहाँ पर और कोर्सेज भी होते हैं. Be design, anybody can apply. Someone without maths, humanities, commerce or science, anybody can apply. Similarly, for CEPT, anybody can apply, which is normally a PCM area into architecture, but they give chance to students of designing. Even from humanities they can apply. So besides that, you have some excellent private institutions. You have Anant National University in Ahmedabad. This is a wonderful college which is low on fee and very high on value. This is run by Piramal Group, right? So this institution is a corporate entity, I would say university, that is purely a design university. इस यूनिवर्सिटी में डिजाइन के अलावा कुछ नहीं होता, डिजाइन एंड आर्किटेक्चर. So someone who has interest into architecture can apply into Anant National University, right? And besides that, you have colleges in Ahmedabad, few more colleges like UID, United World Institute of Design. This can be applied for product, for graphics, like NID, right? For fashion, you have specific institutions in the form of like Symbiosis Institute of Design in Pune. You can apply to Pearl, as you already said. You have UPES Dehradun School of Design that offers you into product as well as I would say interiors, visual, or even in case you want to specialize into product. So you will have all these specializations or graphics being offered at these institutions. So these are some top class institutions. You have another institution in Hyderabad by the name of Voxen. Voxen Hyderabad offers you bachelor's in design programs, which is a different league, altogether a very different program, which is run by industry. So similarly, you have more courses offered. You have close by a university called Rishi Hood in Sonipat that offers bachelor's in design. So if you want to specialize into fashion, graphics, product, interiors, lifestyle accessories, similar types of design programs, you can get into that. The only requirement is that you should be creative. The creativity quotient in you has to be top class. You should enjoy solving problems for others. You should enjoy adding colors to let's say the life, and you should be able to enjoy, I would say, the glamour that is associated with design industry. So these are the ecosystems in which you are going to work for the next 40 years.
आपका जैसा टेम्परामेंट होता है आपको उसी तरह का करियर लेना चाहिए, कभी भी अपने टेम्परामेंट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, राइट? कभी आपने देखा है, हम कितने ही कोर्सेज की बात करते हैं, कभी आपने सोचा है कि कौन से करियर्स बहुत प्रैक्टिकल होते हैं? नेचर ऑफ कोर्सेज होते हैं, उसमें कई जगह बहुत प्रैक्टिकलिटी होती है, एकेडमिक बहुत कम होता है, आई मीन टू से थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स बहुत कम होते हैं और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे बीटेक जैसा करियर अगर हम बात करते हैं, इट इज वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर, you have to spend good amount of time in labs, right? MBBS, if you want to become a doctor, right, you cannot learn surgery by viewing pictures or by reading books. You will have to delve your hands into or soak your hands into blood to become a surgeon. You have to understand those things. Design as a career is very practical. सो आने वाला जो टाइम है, न्यू एज करियर्स के बारे में हम बात करते हैं, दो तरह के आपको आइडियाज बहुत क्लियरली आपको बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। वन एस्पेक्ट इज, हम कन्वेंशनल करियर्स के ऊपर फोकस थे, आज भी हैं। BA, BCom, BSc from Delhi University is something which is very common. Now what happens if you do not get into those top few colleges of Delhi University like St. Stephen's, LSR, right? इस तरह के कॉलेजेस में हिंदू, हंसराज, किरोड़ीमल, इन कॉलेजेस में अगर नंबर नहीं आता है तो नीचे के जितने भी कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दे आर नो लेस देन मेरिट कॉलेज इन मेरिट. So the fun of actually studying and having a healthy college life depends on your decision. आप क्या डिसीजन ले रहे हो आगे की एजुकेशन के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पेरेंट्स का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है इस मामले में, स्पेशली विद रिलेशन टू गर्ल्स. पेरेंट्स कमांड सम काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस कि being a girl you have to do these things only, we will not allow you to do this, we will not allow you to do that. पेरेंट्स का अपना एक इन्फ्लुएंस होता है. बट if you have the ability to prove yourself in some field, बातों से नहीं काम से, if you have some skills, तब पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं. करियर लाइक सिंगिंग, careers like music, right? ऐसे careers जो कि बिल्कुल अनकन्वेंशनल हैं, careers like sports. ऐसे careers में जाने के लिए आपके पास ऑलरेडी कुछ skills होनी चाहिए. And right from the early age, जब आप छोटे थे तभी से आपकी preparations उस तरफ स्टार्ट हो जाती हैं, and gradually you kept on moving into a different zone and ready for careers like practical side of singing. Classical है, उसमें भी इतने सारे जॉनरेज हैं म्यूजिक में, कौन सा जॉनरे पसंद है? वेस्टर्न में जैज है, ब्लूज है, which one you like, right? So depends आपकी क्या पैशन एरियाज हैं, आप क्या चीज करना चाहते हो. नहीं तो कन्वेंशनल एजुकेशन इज द इजीएस्ट थिंग दैट वुड हैपन टू यू. अगर हमारा कोई पर्पस नहीं रहेगा ना करियर के बारे में, तो सीधा सीधा आपका जो कल्मिनेशन होगा, दैट विल बी लाइक I complete my class 12, I appear for some entrance exams like CUET, I get into a government college for studying BA, BSc or BCom, which is taught in the same old manner like 70 years back. No changes. कितने लोग आप में से ऐसे हैं, those who would like to work after school education? After school education, स्कूल खत्म, हम काम भी करना चाहेंगे,
और पढ़ाई भी चलती रहे। ये थॉट होना चाहिए। नॉर्मली जब हम हायर स्टडीज को रेफर करते हैं, हायर स्टडीज क्यों करनी चाहिए? Why we should at all study after class 12? पढ़ तो लिया, काफी हो गया. We have studied so many subjects. We have good idea about each and every field now. Still हमें स्टडी क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपसे जब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको क्या काम आता है, you will have to answer this question. अगर ये काम नहीं आता है, then possibly moving ahead in your life would be difficult. You will be dependent on so many people for everything. आज के टाइम being a girl, I believe, I also have daughters, so I can relate with you also, all of you, that when we are going for a girls' education ahead, make sure that you become financially independent. Make sure that you are financially independent. Whatsoever be the reasons, you have to be financially independent. And to be financially independent, you need to have right skills. बिना स्किल्स के आपको कॉर्पोरेट में कोई एंट्री नहीं मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज और डिप्लोमास. नथिंग वुड हैपन. द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, आपको काम क्या आता है. सो फोकस ऑन आफ्टर स्कूल एजुकेशन. When you go for higher education, please focus on skills. If I will have skills, or if I do a program that involves skills, it will be in our benefit. एक ऐसा कोर्स जिसको केवल पढ़ना ही पढ़ना है, एंड एंड ऑफ द डे ये क्वेश्चन रियलाइज अभी क्लास 12th में so many people I interact, and I don't know how this thought comes to people that I want to do CA, I want to do civil services. At this age, when you plan such things, it becomes very risky, very risky. You have no idea about your potential, and you lose your age in doing such courses that are uncertain. Except for 1% of the person over here who is really a gold medalist kind of academician, who can actually get into civil services kinds of preparations at a later mode also. But if you lose out on that age which you have now, possibly you will never get that opportunity ahead to plan a career for you. सिविल सर्विसेज या चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऐसे करियर्स को प्लान करिए, बट विद टाइम. With time, when you have already settled, when you already have something in hand, you are financially independent. So कोशिश ये करनी है when you move ahead, that all your steps should lead to skills enhancement. अगर हम अपनी skills बढ़ा लेंगे, so कौन सी skills होनी चाहिए that you should focus upon, that can ensure you some good jobs in case you are, ये आपकी natural ability पे depend करता है. Someone who is not good with mathematical skills from the beginning should not pursue a career like finance, careers like engineering, because that requires high mathematical skills. And a person who is good with language, right, and very comfortable in interacting, very social, very amicable, pleasing, polite, good into doing those kinds of roles, you can get into so many careers which are language driven, like law, like media and communications, mass comm, and so many roles into it. Right? So you always have the ability to achieve something in case you are following your natural instincts, natural skills. Do not try to
be rigid with this thought that okay, I can do it. In spite of knowing that you have limitations in certain areas. किसी भी इंसान को अगर अपने बारे में अच्छे से पता होगा who we are, who am I, if you can address this question very well, you can make out a wonderful career for you. कोशिश यही करनी है that we have good idea, we delve deep into us, we should have clarity about us. अगर ये clarity नहीं है, please speak to someone who is unbiased about you, who can tell you about you after discussions. But we should have clarity in terms of picking up the choices that align with us. Skills की बात हो रही थी तो कौन सी skills चाहिए आज के टाइम? Technical skills सबसे ऊपर. Most of the work that you will get in industry at initial level, starting level, will be based on technical skills. सबसे ज़्यादा jobs, सबसे ज़्यादा opportunities उन लोगों के पास होती हैं जिनके पास टेक्निकल स्किल्स होती हैं. एंड टेक्निकल स्किल्स का मतलब ये नहीं कि ओनली इंजीनियरिंग काइंड ऑफ स्किल्स, लाइक कंप्यूटर साइंस में आपने कोडिंग आ गई तो टेक्निकल स्किल हो गई. इट्स नॉट लिमिटेड टू दैट. अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ टेक्निकल स्किल. If you know the accounting techniques, it is also a technical skill. If you know how to invest into a stock market, you know how to analyze the facts and figures, it is also a technical skill. So it's not limited to coding or becoming a full stack developer or a programmer only to be a or a analytical, let's say business analytics or data scientist or economist to be a technician, right? You have other roles also as a technical. A teacher who is teaching is also a technical role, right? Using all kind of gadgets and let's say social media, right? So many other areas that are available to us. We are tech friendly. So technically you should be able to deliver a task. Someone who knows how to deliver a task is a technical skill. So initial skills के level पर आपको हमेशा technical skills ही employ करेंगी. As a designer, you should know what is the expectation of a client, and based upon the expectation or the need of the client, you are producing a certain result for the client, meeting the problem of the client and giving some solution to that client is a technical skill. So ये जरूरी नहीं है कि केवल मैथ्स पढ़ के ही टेक्निकल स्किल आती है. मैथ्स के साथ टेक्निकल स्किल्स ऐड होती हैं, बट यू हैव अदर फील्ड्स आल्सो इन विच यू हैव टेक्निकल स्किल्स. ड्राफ्टिंग, लॉयर्स ड्राफ्ट करते हैं, दैट इज अ टेक्निकल स्किल. A common man, if you ask a common person to draft a agreement, it will be very difficult for a common man to use that language which a lawyer is using. So someone who has studied technical law, let's say legal language, will be able to deliver a contract or write a contract, draft a contract. So that is also a technical skills. So कुछ भी करके you should be able to answer this question कि आपको क्या आता है. Cooking skills, it is a technical skill. Someone who loves to cook has immense potential. आज का टाइम क्लाउड किचन्स का है, वर्चुअल डिलीवरीज हैं, जोमैटो है, स्विगी है, इतने सारे टेक्निकल ऑप्शंस हैं. ये सब क्या है? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन डिलीवरिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट टू द कस्टमर. And when we are using it, we know how to use technology. We have added a technical skill, right? So बहुत सारे careers है that you should search within. आपके साथ क्या मैच होता है? Because all of you are individually different, and we cannot tell a general career for all.
each person will have a different insight into a career. A different discussion can take place with each person, and then we can look forward to what kind of career is most suitable for you and what kind of applications you should move ahead with. So when we are moving ahead, we should also have good idea about all these career options that I just spoke about. कुछ न्यू एज यूनिवर्सिटीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए. How many of you would be interested if in case I send you for some, let's say 1 or 2 days excursion to a university? Let's say you do a short summer program or a weekend program and try to understand what is happening in this world beyond merit. Right, let's say close by, if I send you to Delhi or Gurgaon and let's say make you appear into some process of college life. Let's say you got some idea about college life, make you learn what exactly is a college life or a new age college. Experience करने की, how many of you feel that you would like to experience that before joining a college? So if you have this idea, if you have this thought that you would like to get into such kind of excursions which are completely educational in nature, we have one university or one college which is very close to Meerut and is creating big huge waves into educational I would say platforms, because it says that we will initiate learning by doing. वहाँ के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप पर्टिकुलर कोर्स ही नहीं कर रहे होते हैं, वो साथ साथ इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स भी, लाइव प्रोजेक्ट्स या उनकी प्रॉब्लम्स को साथ साथ सॉल्व भी कर रहे होते हैं. इस तरह के कॉलेजेस का कल्चर बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट होता है. एंड आई वुड लाइक, अगर आप में से कुछ लोग जाना चाहेंगे, यू कैन लेट मी नो इंडिविजुअली, यू कैन गेट बैक टू मी through social media, and you can write back to me that you would be willing to take up some kind of weekend program. I'll send you to those weekend programs, make you registered and send you to those things, and you will see that how things are done, how students are managing the show of corporate. ये कॉलेज है मास्टर्स यूनियन, this is in Gurgaon. I would like you all to at least follow their Insta page. See how different it is from hundreds of colleges. अगर 100 business schools हैं तो ये बिल्कुल अलग है. क्यों अलग है? Because it offers one program which is good for science and commerce with maths के students के लिए बहुत अच्छा है, like UG program in tech and management, UG program in technology and management together. You not only study technical aspects like coding, but you also study business management with technical things. And who teaches you these things? Who are your class, let's say teachers, those who come and teach you there? They are top honchos of these corporates. You will have Ashneet Grover, Amit, these people coming and teaching you in your classroom, right? Some of the CEOs of these top institutions like Samsung, Aviva, Microsoft, Google, Amazon. So you will have ENY, KPMG, McKinsey, right? These are some Bain, BCG, top consulting firms. And can you believe packages going to an extent of 30-35 lakhs per annum to the students of Masters Union? Why? Because they are trained by industry and they are meant for industry. इंडस्ट्री नोज कि उनको क्या पढ़ाना है और क्या सिखाना है, तो वो उसी तरीके से 4 साल तक ट्रेंड होते हैं. एंड नॉर्मली अब ग्रेजुएशन धीरे धीरे 4 इयर्स की आती जा रही है. तो जो लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपने फ्रेमवर्क में लेके आ रहे हैं, यू हैव एग्जिट ऑप्शन एट आफ्टर 3 इयर्स ऑल्सो. 2 साल के बाद भी आप ग्रेजुएशन छोड़ सकते हैं, टेक अ डिप्लोमा, राइट. एंड आपको जब लगे आप एजुकेशन उस समय छोड़ सकते हैं. 4 years for those who want to take up higher studies and maybe delve deep into the curriculum of the structured program that you want to take up. तो बहुत अलग चीजें हो रही हैं एजुकेशन बेल्ट में, and you should have
good idea which is happening around you, right? Okay. So you have many multiple careers. I would like to have questions from you so that I can spend most of my time in answering your questions. At this stage, especially starting with class 12, what kind of thoughts you have about a particular uh, career that you want to do, and you need my help, please do ask a question. Questions from this side? देखो एक बात मैं बताऊं आपको, कभी भी सेशंस हो तो सेशंस को नॉर्मली ऐसे नहीं जाना चाहिए कि हमने केवल बात करी और एंड अप कर दिया। ऐसे सेशंस का कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं उठा पाओगे आप। कोशिश करिए कि आपके क्वेश्चंस हों ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट वी कैन टेक अप दोज क्वेश्चंस एंड आंसर देम करेक्टली, and you should have a clear idea about what you are asking and what you are getting. Yeah, any questions? Who would break the ice? Starting with some question. Okay. Abroad से कर रहे हो fashion designing. What's the best colleges? See, there are many good colleges for fashion. You have London College of Fashion, you have Pratt, you have Parsons in New York, you have Lim in New York, right? Some great colleges are there, and you have Kent University, Nottingham Trent University. Which is better? Foreign countries जाकर करना हो या फिर India से? See, as far as I'll explain you a few things. As far as education abroad is concerned, you have to start from class 9th, right? आपके academics बहुत मैटर करते हैं इंटरनेशनल एजुकेशन में, and I am talking about good colleges. If we are talking about, there are two set of colleges. जैसे इंडिया में एक प्रीमियर सेट ऑफ कॉलेजेस होते हैं और एक टीयर 2 टीयर 3 लेवल पे भी कॉलेजेस होते हैं। ऐसे ही इंटरनेशनल में आप जाएंगे तो आईवी लीग होती है एक। आईवी इज MIT, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, राइट, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, इनकी बात हम करते हैं, राइट। और अगर हम टीयर 1 की तरफ आ जाएं तो थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो आ गया, मैकमास्टर आ गया, यूबीसी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, राइट, इस तरह के कॉलेजेस आ जाते हैं। लंदन कॉलेज ऑफ फैशन, इंपीरियल कॉलेज, किंग्स कॉलेज, राइट। फिर टीयर 2 कॉलेजेस में आ जाएं तो उसके नीचे फिर हजारों कॉलेजेस आ जाते हैं। हमको अगर कॉलेजेस को पकड़ना है तो इसके लिए गोल सेट करने की जो एज होती है ना, दैट इज 9th। जहां अगर फैशन एज अ कोर्स आपको करना है तो फैशन के हिसाब से उनकी क्या डिमांड है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। सो आपको अगर 4 साल पहले पता हो एंड फिर आप प्लान करें उस यूनिवर्सिटी के कोर्स के हिसाब से अपनी प्रिपरेशंस, तो क्या होता है, आपके पोर्टफोलियो भी तैयार होते हैं, बिकॉज रिक्वायरमेंट्स होती है फैशन जैसे कोर्स अगर आप पिक करना चाहते हैं, सो दे वुड लाइक टू हैव योर पोर्टफोलियो। So portfolio is a collection of work that you have done in fashion stream that should demonstrate that you have interest into this field, and you should be able to write an essay of around 800 words that why would you like to choose fashion and why from this university. Such things are generally asked only in international options, but now in India also there are new age university like Ashoka, Flame, Plaksha, right? These are some top class universities, Masters Union, Symbiosis. They've also started asking for statement of purpose. अगर 800 वर्ड्स नहीं बट कम से कम 400-500 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं कि why you want to pick up this course. Getting? So some preparation is needed, but needed let's say 3-4 years back. Let's say 9th में आप हो, आप फिर उसको ड्रीम को चलिए आप उस तरीके से फिर आगे बढ़िए। तो कोशिश ये होनी चाहिए, अगर किसी को इमीडिएट जाना हो तो आपके पास फिर एक डेमोन्स्ट्रेटेड पोर्टफोलियो होना चाहिए, अपना ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होना चाहिए,
आपका कलेक्शन ऑलरेडी होना चाहिए, एंड यू कैन ऑलवेज टेक आवर असिस्टेंस इन फिलिंग दीज इंटरनेशनल एप्लीकेशंस। कि कैसे करना है, वी नो हाउ टू गेट इट डन। बट अभी के लिए आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि 31st December is the end of all applications for admissions in 24 August. जिनका एडमिशन अगस्त 24 में होना था, उसके लिए 31st December is almost closure of deadlines. So October you start, December you close for the admission cycle. So things are very different when it comes to international admissions. In India also now you have colleges where अक्टूबर से जनवरी के बीच में फॉर्म्स आते हैं, जैसे निफ्ट है, NID है, इन्होंने भरा है, ऐसे और भी फॉर्म्स अभी आए हुए हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स के हैं वो। सो यू कैन इंडिविजुअली आस्क मी दोज थिंग्स। आपकी कुछ क्वेरी है, यू कैन इंडिविजुअली आस्क सो दैट आई कैन हेल्प यू इनटू दोज एरियाज। ओके, समवन एल्स हु वुड लाइक टू हैव अ क्वेश्चन? Anybody who would like to ask a question? This side, class 12. आप अपने से ही क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो आप करने वाले हो उसी से रिलेटेड कुछ पूछ सकते हो। At least I'll give you some insight about it. कितने लोग यहाँ रिलाइड ऑन ट्यूशंस सबसे ज्यादा, मतलब मोस्टली PCM स्टूडेंट्स को देखा जाता है या कॉमर्स अकाउंट्स एंड मैथ्स को देखा जाता है, मोस्टली द रिलाई ऑन ट्यूशंस, लाइक कि क्या स्कोर आएगा, अभी तो यही सोच रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम ऐसा सोचेंगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन साइकिल क्लोज हो चुके होते हैं, जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं। अशोका जैसी यूनिवर्सिटी जहां पर 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है आपको, प्लाक्शा फॉर इंजीनियरिंग जहां आपको 100% तक स्कॉलरशिप, भारती एयरटेल गिव्स 20 स्कॉलरशिप्स फॉर 100%, कोई आपको एक्सपेंडिचर नहीं करना, सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज को क्वालिफाई करने के लिए मतलब यू शुड हैव इंफॉर्मेशन एंड यू शुड हैव डेडिकेशन इनसाइड टू गो टूवर्ड्स दोज थिंग्स दैट वी आर टेलिंग यू। कॉलेजेस बहुत सारे हैं, कोर्सेज बहुत सारे हैं, but you should have that idea, you should have that initiative that this is what you want to do, and you want to know the way how to do it. So you can ask more questions in case you have. How many of you are humanities students? Okay. What are your plans, by the way, humanities? What would you like to do humanities में? आप लोग क्या करना चाहते हैं? लॉ करना चाहते हैं। क्लैट अपीयर कर रहे हो आप? ओके। एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हो? कैसे, रास्ता बताओ। UPSC इज आफ्टर ग्रेजुएशन। ओके। एंड ये रास्ता अगर अचीव नहीं हो पाता है, देन व्हाट? किसी वजह से, अगर हमने क्लैट का एग्जाम दिया, किसी वजह से क्लैट नहीं हो पाया, या UPSC का हम ग्रेजुएशन के बाद देंगे, ऐसा क्यों? वाई? ऐसा सोच क्यों है? मतलब कि हम क्या हमने अपने अंदर ये क्वालिटीज देखी कि हम जिसकी वजह से ये डिसीजन पर आए? हाँ, या UPSC का ही क्यों? हाँ, ये अच्छी बात है, इनको देखना, ऑब्जर्व करना अलग बात है, बट अगर हम ऐसे करियर्स में एंट्री करना चाहते हैं तो ये हमारी शेयर एकेडमिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे जाएंगे। अगर एकेडमिक स्ट्रेंथ हमारी बहुत ज़्यादा फाइन है, देन ओनली वी विल बी एबल टू क्लियर दीज एंट्रेंस एग्जाम्स। किसी वजह से अगर UPSC क्लियर नहीं होता है तो आपने कहा मैं फिर लॉ के लिए आगे जाना चाहूँगी, जो कि 3 years लॉ होता है। आफ्टर ग्रेजुएशन यू हैव 3 years
12th के बाद यू हैव 5 years लॉ। तो अगर आप लॉ करेंगे तो अगेन आपकी जो स्किल्स जो चाहिए होंगी, हमेशा जो चाहिए होंगी, दैट इज रीडिंग एंड राइटिंग। हाउ वेल रेड यू आर, आप कितना रीडिंग पसंद करते हैं? रीडिंग पसंद है? न्यूज़पेपर्स रेगुलर रीड करते हो? रेगुलर? ओके, तो जनरल नॉलेज एकदम अपडेट रहती है? थोड़ी बहुत रहती है। हाँ हाँ, लेकिन आगे चल के आपको कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि साथ में 12th भी चल रही है तो ऐसा होगा, कुछ ना कुछ हमेशा साथ चलता रहेगा, एंड स्टिल वी विल हैव टू मैनेज। ऑल द बेस्ट फॉर यू, बट ऑप्शंस थोड़े और बेहतर ऑप्शंस देखिए। अगर आप कॉलेज प्लान करेंगे, कॉलेज कहाँ से प्लान करेंगे? डीयू में CUET का एग्जाम देना होता है, BHU के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो इन कॉलेजेस का जो पढ़ाने का तरीका होता है वो सिलेबस बेस्ड होता है, कोई स्किल्स वगैरह तो ये लोग आगे देते नहीं हैं। तो आपको अगर ऐसे कॉलेजेस में कोई अच्छा कॉलेज डीयू में ऊपर नहीं मिला, या आप ऑलरेडी यहाँ पर कितनी परसेंटेज आती है आपकी ओवरऑल? जस्ट रफ आइडिया। 90s में रहती है 12th में, और 10th में भी ऐसा ही था, 96 थी। तो अगर एकेडमिक्स आप मेंटेन करके चलेंगे तो आपको डीयू का कोई अच्छा कॉलेज मिलता है, यू शुड गो फॉर दैट। जैसे आपने नाम बताया, मिरांडा है या इस तरह के LSR है, अगर ये कॉलेज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, लास्ट ईयर जो फैक्ट्स जो बताए थे, लगभग 50,000 लोगों की 100 परसेंटाइल थी। 100 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल फुल। तो केवल 100% वाले ही स्टूडेंट्स हैं जिनको CUET के थ्रू कुछ ऑप्शन, आपको CUET की परसेंटाइल बता रहा हूं, CUET में इतने लोगों ने स्कोर करा था। तो बहुत कम सीट्स रह जाती हैं हमारे पास। तो कोशिश ये हमेशा रखना कि आप अगर यूपीएससी टारगेट कर रहे हो तो कुछ न्यू एज कॉलेजेस को भी अपनी लिस्ट में डालो, जैसे कि अशोका, जहां पर आपको वो माहौल भी मिलता है जिस माहौल से आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां पर सारे सिविल सर्वेंट्स आते हैं लेक्चर्स के लिए, बहुत कुछ होता है ऐसी यूनिवर्सिटीज में। कोशिश करना आप इसके बारे में थोड़ी स्टडी करिए, अशोका यूनिवर्सिटी को देखिए। और एक और यूनिवर्सिटी है, यू शुड मेंशन, यू शुड नोट डाउन, इज क्राइस्ट बैंगलोर, उसको भी टारगेट में रखिए, वो भी शानदार है। और सिम्बोयसिस में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर कॉलेज है दैट यू शुड टारगेट, सिम्बोयसिस स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स, SSLA। जनरल सिम्बोयसिस काम नहीं आएगा आपको, आपको स्पेशली सिम्बोयसिस स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स काम आएगा, क्योंकि आपको चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से मिलेंगे। तो ऐसे कोशिश करिए। अशोका में अपना एंट्रेंस होता है, हाँ, वो CUET को नहीं मानते। CUET इज मोस्टली फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, हालांकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी बहुत स्कोर लेने लग गई है। बट मुझे बहुत ज्यादा, अगर अर्ली एज में सेटल होना है आपको, तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि मतलब टिल द एज ऑफ 25 हम पढ़ ही रहे। एक तरफ 20-21 साल में समवन हु इज रनिंग अ स्टार्टअप एंड काम शुरू कर दिया है किसी ने, और दूसरी तरफ अभी हम पढ़ ही रहे हैं 25 साल तक, उसके बाद देखेंगे। तो वो थॉट आज के टाइम नहीं चल रहा है। तो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी एजुकेशन लीजिए जो इमीडिएटली आपको मतलब आपने क्वालिफाई करा ग्रेजुएशन एंड इमीडिएटली प्लेस हो गए। ऐसा एजुकेशन सिस्टम हमेशा ज़्यादा आपको आगे ग्रोथ दे पाएगा करियर प्रोग्रेशन वाइज। ओके, एनीथिंग एल्स? Anybody else who would like to ask? We have, I guess, 10-15 minutes. How much time we have, ma'am? 10-15 मिनट हैं? We can have questions, yes. Sir, like we said, we want to work after 12. So what are the options that we
इस पर बोलो. Like we said, we want to work after 12th. So what we can do to be financially independent Okay. after 12th? Okay. See, there are so many things. That depends. आप किस तरह का कोर्स करना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं आफ्टर 12th? You want to do BTech. So let's say if you do BTech from a good college. मैं कहता हूँ IIT हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. IIT नहीं भी होता है. Let's say if you get into colleges like Plaksha, right, or similar like Thapar, right? You have some good colleges in that league, UPES or Bennett, which is not very far and which are good colleges. अच्छे brand colleges से अगर आप BTech करते हैं, so you would be placed. एंड जो वर्क मिलेगा वो आपकी वर्क प्रोफाइल ड्यूरिंग द कोर्स जो आपने अपनी वर्क प्रोफाइल डेवलप करी है उसके हिसाब से मिलेगा. आपने ग्रेजुएशन में आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या काम करा. सपोज आपने डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स पे काम करा, आपने बिजनेस एनालिटिक्स पे काम करा, राइट, या आपने प्रोडक्ट डिजाइन पे काम करा एज अ टेक्नीशियन, एज अ बीटेक स्कॉलर, तो उसके हिसाब से आपकी जॉब्स डिफाइन होती हैं. जो काम आप बीटेक के अंदर करेंगे दैट विल डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ जॉब रोल यू विल गेट फ्रॉम द कॉर्पोरेट एंड व्हाट काइंड ऑफ सैलरी शुड बी देयर. ये भी सब डिसाइड होती है. कितना निश वर्क है आपका, कितना प्रीमियम वर्क है. जितना अलग वर्क होगा उतना अच्छा आपके लिए सैलरी पैकेजेस डिफाइन हो जाएंगे. बट ये कोर्सेज बीटेक वगैरह इस तरह के कोर्सेज हैं कि ये इंडस्ट्री के साथ साथ चलते हैं. आपने सपोज ये प्रोग्राम करा तो इंडस्ट्री की जो करंट रिक्वायरमेंट्स हैं उसको देखते हुए आपने अपने प्रोफाइल को डेवलप करा, वही काम करे जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं. तो अगर आप उस तरह से अपनी प्रोफाइल को रेगुलर डेवलप कर रहे हैं, सो बाय दैट टाइम यू कंप्लीट योर बीटेक, यू विल ऑलरेडी हैव अ लेट्स से ऑफर इन योर हैंड. बट आज के टाइम में बोलूं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज देर आर देर इज अ काइंड ऑफ फ्रेशर ग्लट. बैठ जाइए. फ्रेशर ग्लट इज अ काइंड ऑफ थिंग जिसमें एक बैच पास आउट हुआ, वो प्लेस हुआ, लेकिन उनको ऑफर रोक दिया गया कि अभी रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री की नहीं है, वी हैव गिवन यू एन ऑफर बट वी आर नॉट पुटिंग यू ऑन जॉब. तो एक बैच रुक गया, इतने में दूसरा बैच भी आ गया, राइट. अब दूसरे बैच के साथ भी क्योंकि पहले वाले प्लेस नहीं हुए तो दूसरे वालों को भी ऑफर आ गया, एंड इतने में ही थर्ड बैच भी तैयार होने शुरू हो जाते हैं. तो सडनली बिकॉज द नंबर ऑफ बीटेक ग्रेजुएट्स इज सो हाई दैट industry is also not able to absorb everyone. 80% of engineers that we have in India are not employable. Why? Because what we are studying is outdated and what industry needs, we have never done that. So industry normally, this is a current scenario, even it has been done in the past. Companies like Infosys, what do? Even if you have done BTech and they have selected you, still they will put you into a 6 months training program inside their own, I would say, campus. So Infosys, TCS, they have plans like Wipro, they have plans like first train the graduate and then place them. So it is not easy because of the fresher glut, because of too much of pressure on IT industry. Everybody will not get the employment. Plus the I would say innovation of artificial intelligence has led to cut off for many kind of jobs. जो कोडिंग आप इंजीनियर से करवाते थे अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही हो जाती है, राइट. तो आपको अगर मशीन लर्निंग, मशीन कोडिंग नहीं आती है, आप नॉर्मल कोडिंग ही कर रहे हैं, तो आपके लिए फ्यूचर ब्लीक है, राइट. यू विल नॉट गेट द जॉब. व्हाई? बिकॉज योर रोल इज टेकन बाय मशीन. So you need to be a very specialized, a cutting edge technologist to get a job after BTech. It is not going to be easy, that I am telling you right now.
even if you have studied from a good college. That is why choose your college very wisely. A college that is not in terms with the corporate of current times. It is not adding solutions to the problems of corporate of current times. That college or that course is absolutely obsolete and redundant. It will be of no use to you. And I am sure you would all not like to be part of a fresher glut. Right? That where you have an offer in your hand, but you are not actually working, you are laid off. So this happens in those areas where there is a mass recruitment. It doesn't happen into other areas. मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है, लॉ में ऐसा नहीं होता है, डिजाइन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बिकॉज वहां पर शॉर्टेज है अभी. राइट? मेडिकल फैसिलिटीज हमेशा एवरग्रीन एरिया है, बट मेडिकल फैसिलिटीज में भी अब जो लोग मेडिकल करना चाहते हैं, अगर मैं उनसे पूछूं नीट के बारे में, सो नीट इटसेल्फ इज अ वेरी टफ एग्जाम. Scoring above 600 is what you need as a general candidate to get a GMC, right? So हम लोग मैथ्स छोड़ के हम लोग आते हैं बायोलॉजी की तरफ, बट जो मैथ्स छोड़ते हैं उनको ये भी क्लैरिटी होती है कि फिजिक्स भी अच्छा नहीं होगा उनका, और फिजिक्स अगर अच्छा नहीं है तो पीसीबी का कॉम्बिनेशन कुछ नहीं कर पाएगा. रादर एक पीसीएम का स्टूडेंट बायो के एग्जाम को नीट को क्लियर करने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं अगर कोई पीसीएमबी करके चल रहा है, बिकॉज मैथ्स को छोड़ के कुछ बात बनेगी नहीं, उधर फिजिक्स पकड़ लेगा. फिजिक्स वैसा ही मैथ्स है जैसा ऑलमोस्ट, मतलब आप मैथ्स पढ़ते हैं ऑलमोस्ट उतना ही दिमाग फिजिक्स में भी लगाना पड़ता है. तो ये बहुत कम लोग समझते हैं. हम लोग सोचते हैं मैथ्स को छोड़ दिया तो बायो वाली स्ट्रीम हो गई, बहुत आसान हो गया, फिर आप फार्मेसी, बीडीएस यही सब कर पाओगे, एमबीबीएस जैसे कोर्सेज को नहीं कर पाओगे. लेकिन मेडिकल में इतने सारे और करियर्स हैं, उसके पीछे हम क्यों नहीं जाते? एस्ट्रोफिजिक्स है, राइट, बायोकेमिकल्स है, बायो डेटा साइंसेज हैं, राइट, इतना कुछ है. मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड बायो इज व्हाट इज नीडेड. किसी के पास अगर पीसीएमबी है तो एक एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है, अगर आप पढ़ाई में भी अच्छे हैं तो. ऐसे ही नहीं तो मेरे कहने से किसी ने ले लिया उल्टा फेल हो जाओगे. Right? You should have good idea about who you are, then pick up the subject. So based upon such things we have to pick up a career, we have to choose careers based on these notions. और क्वेश्चन पूछिए, yes, questions from this side, front row. Questions? 11th? Yeah. Someone who would like to ask a question? You have some good time. करियर के बारे में डिस्कस करना वैसे किसी को इतना अच्छा लगता नहीं है. आई नो दैट. क्या करेंगे डिस्कस करके, अच्छी खासी अभी जिंदगी चल रही है, स्कूल में बैठे हैं, सब दोस्त साथ में हैं, आगे की आगे देखी जाएगी, जैसे होगा चलेगा, राइट? वही एटीट्यूड चलेगा या चेंज होना चाहिए थोड़ा? मेरा काम तो यही है, तुम बताना कि आपको कि क्या चेंज करना है, राइट? लेकिन ये फर्क तभी पड़ेगा आपको जब आप एक्चुअली इस डिसीजन मोड में आ जाओगे कि आपको ये डिसीजंस लेने ही पड़ेंगे लाइफ में कभी ना कभी. क्योंकि मैंने देखा है 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस, कंप्लीटली गलत डिसीजंस.
जैसे वो होते हैं बिल्कुल उसके विपरीत दिशा में डिसीजंस लेते हैं, गलत साइड में डिसीजंस लेते हैं। बहुत कम लोगों को देखा है सही डिसीजंस लेते हुए, इसीलिए करियर काउंसलिंग की नीड होती है, ताकि हम डिसीजन सही ले पाए। हमारा काम होता है आपको टू शो यू द राइट मिरर हु यू आर, so that you can take a decision, not we will take a decision. Decision आप ही को लेना होता है, right? So any questions? Okay. OTA exam is after graduation. Let's say if you are a non-maths candidate and आप maths पसंद नहीं है आपको and you want to serve Indian Army, right? So it's a 5 years short service commission जो बाद में extend भी हो जाती है। तो OTA का एग्जाम आप दे सकते हैं। यू हैव गुड फीमेल एंट्री, मतलब काफ़ी विमेन एंट्रीज होती हैं OTA के थ्रू, विमेन ऑफिसर्स दे ज्वाइन थ्रू OTA। तो आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम होता है एक, उस एग्जाम को देके अगर आप क्वालिफाई करते हैं यू विल हैव एन SSB राउंड क्लियर करने के बाद यू विल गेट अ चांस टू सर्व इंडियन आर्मी, right, as an officer. So wonderful chances. Subjects इसमें GK strong होनी चाहिए और English, तो दो एरियाज अगर आपके strong हैं, English and GK, you can do very well into OTA। और इसके साथ leadership skills होनी चाहिए। जो डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं एज एन ऑफिसर, it is not the build that they see in you, it is the mind, it is the coordination, leadership that they see in you. Okay. Yeah. Okay. Any other question? So let's just say we complete our graduation, then जो फैशन डिजाइनर्स होते हैं उनका जो प्लेसमेंट होता है उनको करना क्या चाहिए? फैशन डिजाइनिंग हमने कोर्स तो पूरा कर लिया, आगे क्या करना है? Okay. See, after fashion designing course, you will be absorbed in the industry. You will be specializing into certain things. वो आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अगर आप फैशन कम्युनिकेशन लेते हो तो यू कैन प्ले विद कैमरा, यू कैन कवर लॉट ऑफ फैशन शोज, राइट। और अगर आप फैशन डिजाइनर के तौर पे आगे बढ़ते हो, सो यू विल हैव अपॉर्चुनिटीज लाइक पैटर्न मेकिंग, राइट, डिजाइनिंग ड्रेसेस और एक्सेसरीज, डिपेंडिंग ऑन कि आपका किस तरफ इंटरेस्ट है। बट काफ़ी अच्छा आपको ऑप्शंस मिलते हैं, इंडस्ट्री विल रिक्रूट यू, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, आर्मानी और ये सब जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ज़ारा, राइट, लुई विटॉन, ऐसे कोई भी बड़े बड़े ब्रांड्स, इन सब ब्रांड्स में आप काम कर सकते हो। या ओके, so thank you very much for this discussion. Just one last question you want to ask? Okay. It has been a hobby of mine to learn new languages, so what can we do in that side? See, it is always advisable to learn language when you are young. Let's say when you are small, let's say you start with 2 languages. Let's say normally हमने देखा है CBC curriculum में हम फ्रेंच पढ़ के 8 तक पढ़ते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। आइडियली उसको कैरी करना चाहिए टिल क्लास 12, एंड उसके एग्जाम्स होते हैं, लेवल्स होते हैं, राइट, B1, B2, A1, AC, ये लेवल्स आपको क्लियर करने होते हैं सारे। सो अगर इंटरेस्ट है तो आप इंटरनेशनल भी जाना चाहते हैं, अगर इंटरनेशनल करियर बनाना चाहते हैं, सो अ सेकेंड लैंग्वेज दैट यू आर पिकिंग इज ऑफ मच यूज। कोशिश करिए कि अगर लैंग्वेज पसंद है, शुरू से ही कोई लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हो, तो उस लैंग्वेज में स्पेशली अगर जर्मन सीख रहे हो तो जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, हायर एजुकेशन फ्री है। द ओनली प्रॉब्लम वी गेट इज जब स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं लैंग्वेज नहीं सीख रखी होती है। अब लैंग्वेज सीख नहीं रखी होती है, सो हाउ विल यू जेल विद द सोसाइटी इन जर्मनी? वहां सीख, जिस लैंग्वेज इंग्लिश को हम बचपन से सीख रहे हैं, अब तक मास्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचिए किसी नई लैंग्वेज को पकड़ना कितना मुश्किल होता है। इसीलिए लैंग्वेज को
एक एज होती है उसको पकड़ने की, तो उसके लिए राइट काउंसलिंग एज इज व्हेन यू आर वेरी यंग. स्कूल शुड इनिशिएट दैट एंड यू शुड कंटिन्यू डूइंग लैंग्वेज इवन आफ्टर स्कूल हैज ड्रॉप्ड दैट लैंग्वेज. और अगर स्कूल नहीं है, स्कूल के पास लैंग्वेज नहीं है, एक्सटर्नल ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप उनको सीख सकते हैं, बट इट डज टेक टाइम. इवन ग्रेजुएशन फ्रेंच में, जर्मन में, उर्दू में, पर्शियन में, इटालियन में, स्पेनिश में, इनमें ग्रेजुएशन भी होती है. पूरी ग्रेजुएशन लैंग्वेज के ऊपर होती है. So some people, those who want, you can take studies into Delhi University or into Jawaharlal Nehru University, JNU. बहुत अच्छे courses हैं कुछ. If you would like to have idea about that, you can discuss with me personally. Okay? All right. So thank you so much. It was great to interact with all of you, and I am hopeful that you would be able to take some good steps towards your career. Even if you could not ask questions now, you should have some questions that you can always post back to me. I have my YouTube channel, Love Jain, Career Counselor. You can search and you can subscribe. Today's session will also be edited and would be available on YouTube. And you can even go through a few of my, I would say, career related talks that I'm doing with the colleges. So you will have some idea about what these courses or colleges offer, and you can always get in touch with me directly. I am in Meerut only, though I am connected to students all over India, but I have my office in Ganga Plaza. So those who want to connect, if you have any let's say individual requirement of career counseling, you can fix up the session with me and we can have an individual session with each one of you. Thank you so much. Right. Yeah. Just completed. Okay. So ma'am, anyone would like to? Any other questions you want to ask? Anything else, beta? Sure? Yes.